I've raised the issue of Palampur being made a district. There has to be the interest of the government and the political will to do it, which I feel is lacking in this government. I want to know from you that is Congress ready for this election? Yes, we are all ready. In fact, not only the Congress, the people of the state are ready to throw this BJP government out of power. I would say धन बल का उपयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसे उन्होंने 4 by elections में भी किया. Who says that the party is leaderless? I think the party that is leaderless is BJP. We have Asha Kumari ji as a very good leader. We have Sukhwinder Sukhu ji, Ramlal Thakur ji. We have Harshvardhan John. Where is the dearth of leaders in Himachal Pradesh? But this भी कोविड के समय की ही बात करता हूँ. कोविड में सैनिटाइजर घोटाला हुआ, कौन सी सरकार थी? भर्तियां गलत हुई हैं, उसमें कौन सी सरकार थी? सरकार रेवड़ियों की तरह अपने बाकी डेवलपमेंटल ब्लॉक्स इधर उधर बांटती रही. पालमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने अभी तक डेवलपमेंटल ब्लॉक क्यों नहीं दिया? हम कौन से मापदंड को पूरा नहीं कर पा रहे? मैं ये बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बात से कि यहाँ पर बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा पूरे हिमाचल प्रदेश में. शायद अगले 15 साल तक बीजेपी दोबारा नहीं आने वाली. Hello and welcome to First Verdict Media. I am Neha Dhiman and you all are watching our interview series To The Point. So today to have a To The Point discussion, we have with us Congress MLA from Palampur Vidhan Sabha constituency, Ashish Butail. Ashish ji, thank you so much for being here. Thank you very much. My very first question to you is that we all know that no new districts have been carved out from the state after the reorganization of districts in 1971. Correct. But the demand of the status of a new district to Palampur has gained momentum as you were raising this issue frequently. Yes. So I want to know from you that why Palampur should be a new district? See, firstly, I would like to inform you that for the last 2 consecutive MLA priority meetings, I have raised the issue of Palampur being made a district. At the same time, there has to be the interest of the government and the political will to do it, which I feel is lacking in this government. But the reasons that I have always said that Palampur deserves to be a district is because number one, that it is now with the kind of population that it has, the kind of area that it commands, and also this being a very important place in politically, administratively and otherwise in the state. Okay. This deserves to be a district. Secondly, I'm of the opinion that the smaller the district size is, the better the administrative capabilities come across, and that is one thing that we should firmly look at. Okay. Given the example of Bilaspur, Hamirpur, Una for that matter, and Sirmaur, I would say that smaller districts can administratively do much better than the larger districts. And also after the formation of municipal corporation in Palampur, probably Palampur is the only municipal corporation in the country which is not at a district headquarter. And I am of a firm opinion that it is important, if you've made this a corporation, it is important that this is situated in a district headquarter, and because there are several things that you have to do. Administratively, it will be easier for the corporation to run. Otherwise also, for the people of this area, it is definitely going to be a much better proposal and a proposition. And also, I firmly believe this, that why should Palampur be left out, and why should Palampur be Palampur deserves this to be a district. At the same, like I said, municipal corporation is only, all municipal corporations are situated in district headquarters. Okay. And Palampur should not be left out just because there is no political will of the government. Okay. If we look at the economic structure of the government or the state at this point of time, do you think that we have the infrastructure to make Palampur a new district or to carve any district out of the state? See, we are also talking of financial, of course, there is a lot of financial burden on the government. Okay. But at the same time, we must not forget that the government is expending a lot of money on luxuries. For example, I think a lot of money has been spent on
the residences of ministers, the cars of ministers and board chairmen. And at the same time, where this government was always criticizing the previous Congress government of having so many board chairmen, etc., this government has done the same. Okay. So, is it only because you are financially burdened because of the district and not because of the financially what you're doing for the chairmen and the ministers? I think that is absurd, and it is important to note that the district, when it is carved out, it will also give a lot of respite. It is a developmental activity. It is not something. It is not a luxurious activity for anybody. Yes. And when it is a, I don't think the government should ever think of financial burdens when it comes to developmental activities. And yes, if it was for nothing and if it is something which is out of the way, I don't think that is justified for a district. Yeah. If you also look at the political angle, there are some people who believe that if new districts are carved out of the Kangra district, then the political weightage that Kangra is currently getting will decrease. And they say that no new district will get the amount of attention that Kangra is getting currently. क्योंकि कहते हैं ना कि हिमाचल की सत्ता का रास्ता जो है वो कांगड़ा से होके निकलता है. So do you believe that? See, सत्ता का रास्ता तो फिर से कांगड़ा से ही रहेगा. और कांगड़ा एक लार्जर चंक आज है. When we divide this into three different, different districts, even two for that matter, if Palampur and Kangra remain, in my opinion, we belong to Kangra district. It's not that we don't belong here. Okay. We belong to, and we will always remain to belong here. It's just a matter of getting an administrative help in doing any kind of work that is possible, and then it also depends on the circumstances have changed over time. At one point in time, perhaps there was a time where you would not think of carving out new districts, but when there is a proposal, when there is a need, when there is a necessity to do this, I don't think people should worry about that Kangra will not have, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा जैसे कहते हैं. अस्तित्व खत्म होने वाली तो बात ही नहीं है. कांगड़ा तो कांगड़ा है. कांगड़ा is a larger thing. When you look at the larger picture, Kangra will always remain Kangra. Okay. But Palampur cannot be undeserving because it will be a part, it will be carved out of Kangra. वो undeserved इसलिए नहीं करता है. So I don't think that is the correct way to look at it. Okay. So Ashish, this is the election year. Yes. Battlefield is ready. Politics is heated up. Yes. I want to know from you that is Congress ready for this election? Yes, we are all ready. In fact, not only the Congress, the people of the state are ready to throw this BJP government out of power. And it will happen very soon. And we've shown it in the last four by-elections that have happened in the state. One in our district, one in Mandi, one in Jubal Kotkai of Shimla district, and one in Solan district's Arki. So people have shown their resentment towards the government, and they have made it very clear that this government has to go out. So things are heating up. It is the election year. The government has nothing but will also try full-fledged, I would say धन बल का उपयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे. सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसे उन्होंने 4 बाई इलेक्शंस में भी किया. लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता बुद्धिमत्ता से वोट देती है, बुद्धिमत्ता से काम करती है, विकास कार्यों पर काम करती है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल ठप पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में. But currently, if we look at the bigger picture of Congress, the main problem with the party is the leadership, the lack of the leadership structure. There's no face for Congress. How would you justify that? What face are we really looking at? देखो, when Raja Veerbhadra Singh ji has remained chief minister for so long, and he recently passed away, everybody was working under his banner. Yes. The Himachal Congress was looking up to him, and we all knew that he is the leader, and we were looking at him at that point in time. And
even now things will change. It is not necessary that the things will not change. So we had a leader then, but when he's not there, circumstances are different. And who says that the party is leaderless? I think the party that is leaderless is BJP, not the Congress. We have the CLP who's doing a very good job. Budget session is just around the corner. Yes, it Mukesh is. Agnihotri will take up issues. We have Asha Kumari ji as a very good leader. We have Sukhwinder Sukhu ji, Ramlal Thakur ji. We have Harshvardhan Chauhan. Where is the dearth of leaders in Himachal But Pradesh? this multiple leadership here will create some kind of walk or I would differ with you on that. The more the leaders that who protect the junior leaders of the state, I think it is important for us to. It is not about the chief ministership that we are talking about. What we are talking about necessarily is coming back, bringing back Congress to power, yes. and everybody is determined that it is not necessary that how they will be placed, where they will be placed, but everybody is going to work towards bringing back Congress, bringing Congress to back to power. And also like they say कि हमारी रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है. तो मंजिल यही है कि कांग्रेस पार्टी को वापस पावर में आना है. और जितने ज़्यादा लीडर्स हैं, हर एक ज़िले में अगर हमारा लीडर है वो एक अच्छी बात है, वो कोई बुरी बात नहीं है. अगर हर एक ज़िले में एक हमारे बड़े लीडर वहाँ पे मौजूद हैं तो उनकी वजह से हम लोग वापस आएंगे. And they will all work hard, they will all work together. We have shown that in the last by elections. हमने वो दिखाया है अभी करके. But ultimately there has to be one chief minister. See, that is not for there are two ways that I would look at it. चीफ मिनिस्टर तो तब होंगे जब कांग्रेस पार्टी पावर में आएंगी, और कांग्रेस पार्टी को पावर में लाने के लिए हम सब लग रहे हैं. मतलब 68 की 68 सीटों पे जितने भी कंटेस्टेंट्स होंगे, वी विल ट्राई कि सारे के सारे जीत कर आए. और जितने बाहर से भी जो लीडर्स हमारे सीनियर लीडर्स हैं, वो लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के हर एक नुमाइंदे को यहाँ से जिताया जाए. When it comes to the chief ministership issue, I would think that the CLP, once elected, all the people who are elected in the CLP, they decide, and finally it's the high command's decision that we have to all abide by. CLP will decide. जब MLA जीत के आएंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, वो उसमें decide होता है. So you have said it that we will abide by the decision of the high command. I am saying that it is a democratic party. कांग्रेस पार्टी इज़ वेरी डेमोक्रेटिक, बहुत अच्छे से चलती है और सबकी बात यहाँ पर पूछी जाती है, मांगी जाती है, बात कही जाती है. और वहाँ पे जब निर्णय जब आता है तो वो CLP के जब MLA जीत कर जाएंगे उसके बाद वो निर्णय आना है. जहाँ से भी आए, जैसे भी आए, दैट इज़ नॉट माई प्रेरोगेटिव. लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं कह सकते कि चीफ मिनिस्टर आज घोषित हो रहा है. आज तो घोषित होने का सवाल ही नहीं कोई. लेकिन सब के सब जितने सीनियर लीडर्स हैं वो सब इसी काम पे जुटे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में. There have been some instances जब ऐसा देखा गया कि कुछ कांग्रेस के विधायक, कुछ MLAs जो हैं वो दिल्ली गए हैं और वहाँ पर मीटिंग्स हुई हैं. ऐसी कई देयर वर सम न्यूज़ेस जिसमें ऐसा कहा गया कि लोग जो हैं अब कहने लगे हैं एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो है वो डेवलप हो रही है कांग्रेस में, नेम्स हैव कम अप. उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा मुझे लगता है कि अगर हम लोग में से कोई भी अगर दिल्ली जाकर अपनी बात हमारे पार्टी की हाईकमान से रखता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है. हो सकता है किसी के खिलाफ हो, किसी के फॉर हो, लेकिन जो भी बात है वो हाईकमान के पास रखने में तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. बीजेपी वालों ने ये बात ज़रूर फैलाई है कि, और ध्यान भटकाने के लिए लोगों का ये बात ज़रूर फैला रहे हैं कि जी आज उस ग्रुप की मीटिंग होगी. यहाँ पे एक ही ग्रुप है, यहाँ पर एक ग्रुप है जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है, और वही कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस लाने के लिए, जैसे मैंने कहा, सब उसके लिए लगे हुए हैं. इसमें ग्रुपिज्म का कोई इशू नहीं है. सब अपनी बात खुलकर हाईकमांड के पास रख सकते हैं. इससे ज़्यादा मुझे लगता है लोकतंत्र में इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है. जी बिल्कुल. If we talk about the budget session that is here almost, what are those issues that you will be raising in that budget session? See, three issues mainly that I would like to raise. One is
the rampant corruption in this state that has happened in the last 4 years, the issue of berozgari, as we call it, unemployment at its hilt, that is what has happened in the last 4 years. एंड जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, मुझे लगता है कि हर एक हाउस होल्ड को चलना बहुत मुश्किल हो गया है, और हर आम आदमी का इशू हम लोग इस पे उठाएंगे, चाहे वो मकानों का इशू हो, चाहे जिस तरह से सरकार ने लोगों के साथ उनके साथ गलत वादे किए हैं, उनको हम लोग उठाएंगे। जो पुराने बजट्स में, अभी ये नया बजट पेश होने वाला है, लेकिन जो पिछले बजट्स थे उनमें से कई some things have not even taken off, and the government is responsible for that. When जब आपने एक बात ये कह दी है कि हमने ये बजट में अनाउंस कर दिया, तो वो क्यों नहीं हुआ? तो ये सरकार से पूछना, जनता के लिए पूछना हम सबका ये फर्ज है, और हम सब ये करेंगे। आपने अभी कहा कि करप्शन जो पिछले 4 साल में हुआ है, सो आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू, बीजेपी एक्चुअली क्लेम्स कि पूरा जो कार्यकाल उनका रहा है दैट हैज़ बिन करप्शन फ्री, साफ सुथरा कहते हैं वो, क्लेम करते हैं कि काफ़ी साफ सुथरा जो कार्यकाल है उनका रहा है, करप्शन जैसा कोई कुछ था नहीं उनके कार्यकाल में। तो किस बात की आप जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं? अगर मैं एक सीधी सीधी बात करना चाहूँगा, बहुत दूर नहीं जाऊंगा, अभी कोविड के समय की ही बात करता हूँ। कोविड में सैनिटाइजर घोटाला हुआ, कौन सी सरकार थी? जो आपके यहाँ पर जो भर्तियां गलत हुई हैं, उसमें कौन सी सरकार थी? और जहाँ पर जब ये कहते हैं कि हम लोगों ने कोई करप्शन नहीं की, आई एम अ मेंबर ऑफ द चार्जशीट कमेटी ऑफ द कांग्रेस, वी आर फ्रेमिंग अ चार्जशीट अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट विच अ कॉपी विल बी आउट वेरी सून। और जैसे ही वो कॉपी आएगी, इन सब के सब घोटाले जो इन्होंने किए हैं वो सब के सब सामने आएंगे, ये बिल्कुल जनता के सामने पेश किए जाएंगे। जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में भी थोड़ी सी बात यहाँ पर करना चाहेंगे। व्हाट आर द इश्यूज दैट योर पीपल आर फेसिंग करंटली, एंड डू यू थिंक कि क्योंकि अभी प्रदेश में जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज पालमपुर को किया गया है, पालमपुर इज बीइंग इग्नोर्ड, डू यू फील दैट? यस, बिल्कुल किया जा रहा है, और मैं ये बार बार कहते भी आया हूँ, और मुझे कोई गुरेज भी नहीं है ये कहते हुए कि पालमपुर इज बीइंग इग्नोर्ड टोटली। सी, हमारा एक इशू था कि एक डेवलपमेंटल ब्लॉक यहाँ पर आना था, जो जिसको विकास खंड कार्यालय कहते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर 3 विकास खंड कार्यालय हैं, जिनमें मेरी 36 पंचायतें जाती हैं, बैजनाथ, पंचरुखी और भवारना, और सबको एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्न करना बहुत मुश्किल है। तो कोई 5 पंचायतें बैजनाथ में है, 7 पंचरुखी में है। हमने ये कहा था कंसोलिडेशन कर कर इसको पालमपुर में लाया जाए, जिसकी कवायद पिछली कांग्रेस सरकार में चली थी। ये अनफॉर्चुनेट है कि सरकार चली गई, और जब ये शुरू हुआ था, हम इनसे मांग रखते हैं आज भी। हम लोग, मैंने कई बार विधानसभा में कहा, मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने उनको ज्ञापन सौंपे, जब यहाँ पर पालमपुर आए तब हमने ये बात रखी, और माननीय मंत्री जी के समक्ष ये बात रखी, और उनसे हमको ये आश्वासन मिला था कि इस पे विचार हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डिजर्विंग कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, जैसे कि दून, दून, ये ज्वाला जी और पालमपुर, ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे अपना डेवलपमेंटल ब्लॉक इनका नहीं है। सरकार रेवड़ियों की तरह अपने बाकी डेवलपमेंटल ब्लॉक्स इधर उधर बांटती रही, लेकिन इन तीन को भी छोड़कर पालमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने अभी तक डेवलपमेंटल ब्लॉक क्यों नहीं दिया? हम कौन से मापदंड को पूरा नहीं कर पा रहे? पिछली बार मैंने विधानसभा में ये प्रश्न लगाया था, मैंने उनसे पूछा था कि ऐसा कौन सा मापदंड है जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जवाब में जितने भी उन्होंने मापदंड बताए, उनमें से हम सबके सबको पूरा करते हैं, और दैट इज़ वन इशू। द अदर इज़ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पालमपुर के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है। मैं छोटी सी एक बात कहूँगा कि जैसे हमारे एक बहुत प्रेस्टिजियस चामुंडा माता का नंदिकेश्वर धाम का ट्रस्ट है, उसके अंदर पहले 6-7 मेंबर्स हमेशा पालमपुर से होते थे, एंड इट इज़ राइट जॉइनिंग पालमपुर, बॉर्डरिंग पालमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी। इस बार जो है बाहर की कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि 70-70 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ के मेंबर्स उस ट्रस्ट में हैं, लेकिन पालमपुर से एक भी मेंबर नहीं। और हद तो इस बात की है कि जो भी
आप जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन पालमपुर में अगर कोई काम हो रहा है तो वो केवल या तो पिछली सरकार का कैरी फॉरवर्ड वर्क्स है जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन या शिलान्यास किए होंगे, या विधायक प्राथमिकता के। इसके अलावा जो काम है वो पालमपुर में बिल्कुल ठप पड़े हैं। कॉरपोरेशन पालमपुर में कांग्रेस पार्टी की बनी है, सरकार ने कॉरपोरेशन बनाई, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर कॉरपोरेशन में पार्षद जीत कर आए, मेयर डिप्टी मेयर कांग्रेस पार्टी के। आज हालत ये है कि जहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि इन लोगों को काम ना किया जाए, ना करने दें, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। अगर ये काम कर देंगे तो शायद बीजेपी का गुणगान लोग नहीं करेंगे। तो इस करके इस डर से शायद इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी करने की कोशिश की है, जहाँ पर जैसे पीएमएवाई के मकान हैं, चिट्ठियाँ उन लोगों तक पहुँचा दी हैं कि अपने वो लोगों ने अपने मकान तोड़ दिए कि वहाँ पर वो उनको पैसा आ रहा है और वहाँ से, लेकिन उनको पैसे आज तक नहीं मिल रहे, पहली पहली किस्त इशू नहीं हो रही। तो उसमें भेदभाव नहीं है तो और क्या है। मुझे लगता है पालमपुर के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव सरकार कर रही है, जो कि पालमपुर की जनता इनको जवाब देगी। And how will that change? How will that change when? When will that change? When will that change and how will that change? See, कि that will only change once the government changes. When the government has decided that they are not going to do anything for Palampur, आप इसको ब्लॉक कार्यालय नहीं देना चाह रहे, आप इसको ज़िला नहीं देना चाह रहे, आप इसको ज़िला तो एक बड़ी बात है, लेकिन आप ब्लॉक कार्यालय जो कि डिज़र्व करता है नहीं देना चाह रहे, आप इसके कामों में रोक लगा रहे हैं। MMGSY जो कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का, जहां पर पैसा 7-7 करोड़ एक कॉन्स्टिट्यूंसी को जा रहा है, या कम से कम फिर भी 50-60 लाख रुपया किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को जा रहा है, वहीं पर हमें 20 लाख रुपया मिला था। तो ये एक सामने सामने से भेदभाव सरकार हम लोगों से कर रही है, पालमपुर की जनता से खिलवाड़ हो रहा है, और पालमपुर एज अ कॉन्स्टिट्यूंसी उसके साथ ये बात हो रही है। मुझे लगता है कि ये आपने पूछा कि ये कब ठीक होगा, ये तब ठीक होगा जब ये सरकार जाएगी। जी। और अभी की अगर यहाँ पर हम वर्तमान परिवेश में स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि बीजेपी इज़ टोटली एश्योर्ड कि मिशन रिपीट होगा और रिपीट जो है हम करेंगे, दे लुकिंग कॉन्फिडेंट। तो क्या लगता है आपको, इज दिस state government is in a situation to repeat? See, it is good to be confident, but not very good to be overconfident. And that is what the government of the day is doing. The BJP government is overconfident, and they have shut their eyes and shut their ears, not ready to listen to anybody, not ready to see what is happening on the ground. एंड आज माहौल ये बन चुका है कि जहाँ पर बच्चा बच्चा ये कहता है कि बीजेपी की सरकार नहीं आनी है। कॉन्फिडेंस की कमी उनमें नहीं है, अच्छी बात है अगर वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन मैं ये बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बात से कि यहाँ पर बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा पूरे हिमाचल प्रदेश में। शायद अगले 15 साल तक बीजेपी दोबारा नहीं आने वाली। जी चले, इट्स गुड दैट यू कॉन्फिडेंट टू, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस टुडे। एट द एंड, इफ यू वांट टू से एनीथिंग और डिलीवर एनी मैसेज टू द पब्लिक, यू कैन। See, there's not much message that I would like to deliver, but yes, the only party that can actually help Himachal Pradesh grow, get out of the debt that we are in, a massive financial debt that we are in, is Congress. And I think people themselves know this better than I can tell them. तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ही लोग लेकर आएंगे। मैं मैसेज आपके माध्यम से बस यही देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच।